You have to redraw the given space diagram with some suitable scale. After redrawing that, first you have to read your numerical. Listen carefully all steps. Why to read the numerical? Now in this numerical, they asked you to find out the velocity of slider E, and angular velocity of BC. ये है क्या? नहीं, ये मतलब बी और ई का कनेक्शन ही नहीं है ना. BC, angular velocity of BC, because there is no link between B and E. So how to find out angular velocity? There is no connection between B and E, right? So make it correct. BC, angular velocity between BC, of link BC. If in your numerical they just ask you to find out this, then this is a statement. Just they are asked you to find out this. Now what to calculate this by the ICR method, whatever the calculations are there, write that formula first. Not necessary to locate all the ICRs. Not necessary to locate all the ICRs. By our process of the four-bar kinematic chain, what we decided? The number of ICR n equal to n minus 1 divided by 2. This is the formula to find out number of ICR for the given mechanism. For that you must know the small n. Small n is number of links. So this fixed link. This is also fixed link 1. A to B, link 2. B to C, link. B to C. C to E. And slider. How many linkages are there in this mechanism? 6 linkages. If 6 linkages are there, 6, small n is 6, 6 minus 1 divided by 2. How many? 50. So number of ICR for this mechanism are 50. Now to locate the 15 ICRs, it is very tedious job. It is very tedious job. It will take 2 hours to locate all ICRs. So what you have to do? For such numericals, if they ask you such numericals, 6 link numerical, where 15 ICR you have to locate, you just go through here what you have to calculate. What they have asked to calculate. Now for this calculation, I need to locate the required ICRs only. I need to locate required ICRs. So locate that ICR which are required for your calculation. Don't go for the location of all 15 ICRs. Are you getting me? समझ रहे कि नहीं? Then this problem will justify the marks. But on the contrary, if they ask you 4-bar single slider where 4 links are there, how many ICRs will come? 6. 6 ICR, location of 6 ICR is very easy. Right? In that case, you have to locate all ICRs plus you have to calculate the given findings. Are you getting me? If numerical is 6 bar, until unless they are not mentioned in your numerical, locate all ICRs. Locate. तब तक आपको पूरे ICR लोकेट करने की जरूरत नहीं. In the same numerical, they just ask you, this is the given diagram, space diagram. For this mechanism, you have to calculate the velocity of slider E and angular velocity of BC. That's it. Nothing else. So for this, I have to write first equation. After writing that equation, I will come to know that which ICRs are needed. Are you getting me?
only those ICRs you have to locate. Those ICRs you have to locate. Hope you got this. Yes or no? Yes. So what we will do? We will follow our steps, what we have learned for the 4-bar mechanism. What is, after calculating this, what is the next step? What is next step? You have to make the table. What is there? Link and ICRs. How many links? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 links already noted there. Yes or no? Yes. So what I said, you to write the ICRs made by this link number 1, you have to just make the combination of all the links with the 1. All the links with means I can write the ICR made by link 1 is I12, I13, I14, I15, I16. That's it. Link number 2. Record all the ICRs or combinations of this link with the other ICRs, other links. So I can write I23, I24, I25, I26. Similarly, third link combination with other remaining link 3, 4, 3, 5, I36. I45, I46, I5 dash. Now count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. What was your calculation? 15. You got the 15 ICRs? Yes. This mechanism will have these ICRs. This mechanism will have these ICRs. Getting me or not? Everybody getting? Yes. Mukul? So these are the ICRs. Now you know the types of ICRs beneath. You know the types of ICRs. First type, fixed one. Second one, now these first 2 types of ICRs you can locate. You can locate by visualization. By visualization. So I am going to locate these ICRs, link 1 and link 2, making here I12. Any doubt? This is fixed type. Yes or no? Link 2 making connection with link 3. Here at this pin joint they are making the ICR 2, 3. Link 3 and 4. I34. Link 3 and 5. I35. Yes or no? Link 4 and 5. एक जगह कितने आईसीआर आ गए? 3 आए कि नहीं? 3 लिंक कनेक्ट है यहाँ पे, 3 आईसीआर देखिएगा अपना यहाँ पे आए 1, 4 at this pin joint I 5 and 6. Slider is sliding on link 1. Slider is sliding on link 1. Now this topic I have not taught yet, but listen carefully. Whenever slider is there, this slider sliding on link number 1, slider is having number 6. Where will be the ICR of the slider sliding on the fixed link? Slider sliding on that I have not taught yet. For such cases, if slider is given in your mechanism, then the ICR of that particular slider 6 with the link 1 will be a vertical line at infinite. कितने distance में आएगी? Infinite. And that ICR I will write I16. Because this ICR between slider and link 1 will be act at
infinite distance, at a infinite distance. आप बोलेंगे infinite distance और horizontal भी रह सकता है. How it is sliding? Horizontal. Draw a perpendicular infinite to the line of action. Draw a perpendicular infinite to the line of action. Getting or not? Now this is not end. This is not end. The same vertical line for the slider ICR you can also show wherever you are having fixed position. Now this A is fixed position or not? Here, somewhere here, A is fixed. Yes or no? Yes. Now another fixed position is there at D. Is that or not? So that D is here. In your mechanism to show the slider ICR, then in your mechanism to show the slider ICR, not only you have to draw the vertical line at the slider at infinite distance, you also have to draw a vertical line to show I16 at infinite distance from all fixed positions, from I16 at infinite. I mean to say that if in your mechanism there is a slider sliding, draw a perpendicular line to the line of action. How is the line of action of this slider? Horizontal. Perpendicular it is vertical. So where it is? This ICR is at infinite distance. At infinite. Not only at the slider level you have to show this infinite line. This line may be upward or downward, but it is infinite line. This is infinite. You are also suggested to draw this infinite line to show the ICR 16 at an infinite distance. You are suggested to draw that infinite line at fixed position also. Getting me or not? Everybody? Why I have drawn the infinite line at fixed A? Why I have drawn the infinite line at fixed B? Because there is a slider. So slider ICR you have to show at the position of slider as well as wherever you are having fixed points. Wherever you are having fixed points. Hope you got this. Vicky? Yes or no? Are bolo na yan? So the another ICR I have with me is what? I16 where? Infinite. And same ICR I have to show at fixed positions. Yes or no? I16 at infinite. I at infinite. Hope you got this. Everyone? Yes. So come to your table now. Come to your table. Whatever the ICR you got by your open eyes, that you have to round up. That you have to round up. What is first? 1, 2. Then 2, 3. Then 3, 4. Then 3, 5. Then 4, 5. Then 1, 4. Then 5, 6. Then 1, 6. Any more? Any more? Four? जो ICR fixed and permanent ICR है, that I can got by the visualization, by the that ICRs I have located, rounded up in my table, rounded up in my table. Getting or not? Yes. Now what I said, this is 6 numerical. Whatever they are asked to calculate, only that ICRs you have to locate. Only that ICR you have to calculate. Not necessary to locate all the remaining ICR. बचे वाले कौन से ICR है? I13 है, I15 है. These ICRs not located yet. This comes under the category of what? Neither fixed nor permanent. Neither fixed nor permanent.
First two type, fixed and permanent type of IC are located. Yes or no? Yes. Third category is neither fixed nor permanent, that are not located, and the unrounded ICRs which are come under the neither fixed nor permanent type, that I have to locate. But not all. But not all. Because it is 6-link numerical, until unless they are not asking to locate all the ICR, you need not to locate all ICRs. Nobody will ask you to locate all ICRs. See, your calculation findings depends upon that finding. You have to locate those ICRs, required ICRs. Not all ICRs I am going to locate here. The ICR needed for my calculation, that ICR I am going to locate. But which are the ICRs required for my calculations? That ICR you have to find out first by writing the equation. Now tell me, first I will go for the omega. Omega calculations are easy. Omega calculations are now omega BC. Omega, which is the BC? This link. Yes or no? Link 1 is fixed. Link 2 is AB. Link 3 is BC. Yes or no? On that day, I explained you what Kennedy's, not Kennedy's, angular velocity ratio theorem. What is that angular velocity ratio theorem? Generalized formula I have given, omega x divided by omega y equal to omega 1y omega xy divided by omega 1x. ये generalized formula दिया कि नहीं उसकी? You can apply except slider. Slider will not have the angular velocity. It only got the sliding velocity. Yes or no? Yes. Except slider, you can use this angular velocity ratio theorem. Right? For link 2, read your numerical. For link 2, what they have mentioned? They have given the speed. Crank AB is rotating with. So the speed of crank AB they have given, that is 180. Yes or no? Yes. By knowing this speed, I can find out omega BA. How? 2 pi n BA divided by 60. 2 multiplied by pi multiplied by 180 divided by 60. Divided by how much it is? 18.84 radian per. Yes or no? Yes or no? By the given data or available data, I can find out the angular velocity of link BA. Now link BA, what I said, this is the fixed link is 1, A to B is link. A to B is link what? 2 or 3. So omega B is nothing but omega 2, no? Yes or no? What I said, angular velocity ratio theorem. What will be the formula for angular velocity? Let's consider what they have asked. Find out the angular velocity of what? BC. Where is the BC? Link number what? BC का लिंक नंबर क्या है? अप्लाइड अवेलेबल कौन है मेरे पास? x 2 अवेलेबल है या नहीं? सो माय फॉर्मूला विल बी ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय, जो फाइंड आउट करना है, कौन सा करना है? BC ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा 1 3 ओमेगा 2 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 2 ओमेगा 2 3. ये है मेरे पास. क्या निकालना है? ओमेगा 3 निकालना है. यस और नो? चलो अभी आईसीआर मेरे इक्वेशन में कौन से आईसीआर है? ओमेगा 1 3 आया. अगर
I13 अवेलेबल है क्या? देखो यहाँ पे I13 नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा 23 है क्या? Yes, 23 is available already. It is located. Yes or no? Not necessary. Go for the 23. 1 2. It is available. 2 3 निकालना की जरूरत नहीं है. Only one ICR to find out the omega 3. What is that? Are you getting me? समझ रहे हैं सब? How to go for calculation equation? If your equation with you to calculate this, to solve this, which ICR I want? This ICR I want. I13 मुझे निकालना पड़ेगा. हाँ. Only this class is out of Eva A, B, C, S, Y, or S, Y. It is not. Today I have shared you circle diagram. Yes, circle diagram. To locate the required ICR, what I taught you, you have to go for the circle diagram. In circle diagram, you have to draw one circle of any diameter. How many linkages are there? What I said, the linkages which are having lengths in your space diagram that are shown by the points on the circumference here. Yes or no? So you just remember that on circle diagram you have to show the linkages, all linkages 1, 2, 3, 4, 5, 6 by the dots on the circumference of circle. Listening me or not? Yes. So link number 1, link number 2, link number 3, link number 4, link number 5, link number 6. How many links were there? 6. All the 6 links I have located on the circumference or not? Yes. I have located these linkages on this circle. Now go for this. Which ICRs are having their connections? Start from the beginning. 1, 2. There is a solid connection. They are connected directly. 1, 2. Then 1, 2, 2, 3. 2, 3. Then 3, 4. 3, 5. 4, 5. 3, 4. 3, 5. 4, 5. Then 1, 4. This 1, 4 I have located. Then 5, 6. 5 and 6. Then 1 and 6. For the ICRs which already I have located, that you have to show by the connections. Any doubt in this? Now what I am looking for? To solve the omega half BC link, what I am looking for? 1, 3. Because other ICRs are available for my calculation. Yes or no? 1, 3. Where is the 1? This is the 1. Where is the 3? This is the 3. Make the connection between 1 and 3 by dotted line. And write on that dotted line, this is the ICR 1. Now remember, these lines are ICRs. The points in that diagram are shown by the lines in this diagram. Yes or no? ICR 3, 4, ICR 4, 5, ICR 3, 5, ICR 1, 4, ICR 5, 6, ICR 1, 6. Which ICR I required for my calculation? 1, 3. So what I did? I have connected 1 with the 3 by the dotted line. Yes or no? Now next step, just put your hand on this dotted line. Put your hand on this dotted line. And observe that you will get the 2 triangles. Above this dotted line, one triangle is there. Below this dotted line, another triangle. The triangle above this dotted line, I13 is 1, 2, 3. Yes or no? Below this dotted line, 1, 4, 3. Yes or no? These are the 2 triangles available, More. Yes?
और है क्या नहीं? Yes. So I will write here ICR13 will be in line with these two sets. Which two sets? 1, 2 and 2, 3. I12 and if I treat the lower triangle, I13 will be in line with I14 and Y34. I14 and I. Everybody getting what? Yes or no? समझ रहे कि नहीं? Now come to your diagram. Where is the 1, 2? This is the 1, 2. Where is the 2, 3? This is the 2, 3. In the line of 1, 2 and 2, 3, in the line of 1, 2 and 2, 3, which ICR will come? 1, 3. So just I will extend this. इसके लाइन में आने वाला है, कैनरी बोलता है ना? Yes or no? If three links are connected with each other and having the relative motion with each other, they will form the three ICRs and all these three ICRs will be in one line. In one line. तो यही बोलता है ये दोनों ICR के लाइन में 1, 3 आने वाला है. ये दोनों कहाँ पे 1, 3 इधर है, 2, 3 इधर है. ये लाइन उधर आने वाला है 1, 3. दूसरा से ट्रीट करो 1, 4 and 3, 4. Where is the 1, 4? Where is the 3, 4? यहाँ पे है ना? So I will 3, 4 and 1, 4 यहाँ से एक एक्सटेंड करता हूँ लाइन. And this is my ICR 1, 3. This is my ICR. Now I got the ICR 1, 3. My calculations are done. How? Now how to calculate this? Remember, see here. अरे तो ओमेगा लिहिलं तुम्ही सांगितलं नाही. आय लिहायला पाहिजे ना. I1 Y I X Y I1 X I X Y. So I1 3 I2 3 I1 I2 3. Sorry for this mistake. What I want, I1 3. I got it or not? Yes. Now this is not a multiplication between two ICR. This is the distance. This is the how to use this distance here. I1. This is the ratio formula. Don't do any calculations here. Multiplication by the scale. कुछ भी मत करो. जो है वो डिस्टेंस से करो. रेशियो है ना, रेशियो के फॉर्मूला में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. So measure the distance between I1, 3 and 2, 3. 1, 3. Where is the 2, 3? ये टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है वो आपको मेजर करना है. Are you getting? And that distance, let's consider that distance is 25.5 सेंटीमीटर. मेजर करने के बाद उतना है. फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं. Divided by, measure the distance between these two ICR, 1, 2 and 2, 3. Where is the 1, 2? Where is the 2, 3? This distance is given to you, no? Whatever the dimension they have mentioned, just put that here. In centimeter. If this is in centimeter, this should be in centimeter. सुन रहे कि नहीं? This centimeter will get. Now come to omega. This omega 2 already calculated how much? 18.84. What is the unit of omega? Radian per? This is omega 3. Omega 3 will go to this side. 10.5 will multiply this and total will divided by what you will get? Omega 3 in radian per second, no? This is the how to calculate. Now आप बताएंगे सर आपने तो ओमेगा का कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम से बहुत इजी है. What about this velocity of E? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सुन रहे क्या आप?
यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ ई, अगर लीनियर वेलोसिटी निकलना है यू हैव टू फॉलो द व्हाट formulas I am giving to you. Angular velocity is very easy formula, but linear velocity हर किताब में पढ़ो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा हाउ टू कैलकुलेट द linear velocities of the linkages or any points. सुन रहे ना? So I am doing that calculation over there. Now come to here. E तक पहुंचने के लिए वेयर इज द ई? ई कहां पे है? स्लाइडर है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सी का वेलोसिटी मालूम चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यू हैव टू लिसन केयरफुली। ई की वेलोसिटी अगर निकालनी है आई मस्ट नो द वेलोसिटी ऑफ सी। आई मस्ट नो द वेलोसिटी ऑफ सी की अगर मालूम चाहिए तो मुझे बी की भी मालूम चाहिए, बी की मालूम चाहिए, ये बी की मालूम चाहिए। ये कनेक्शन है, सुन रहे कि नहीं? सो जस्ट आई विल राइट द इक्वेशन। आपको बेसिक इक्वेशन मालूम है, वो बी इक्वल टू व्हाट? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टली आई विल टेक यू टू डायरेक्ट जो कैलकुलेशन वाली लिंक है वहां पे लेके जाता हूं। ई का वेलोसिटी चाहिए, किसका चाहिए? ई का। तो मैं डायरेक्टली ये लिंक को ट्रीट करता हूं यहां पे। विच इज दैट लिंक? सीई। विच इज दैट लिंक? सीई। एंड दिस वेलोसिटी इक्वेशन आई विल राइट इन दिस फॉर्म, ओमेगा इक्वल टू, ये ध्यान में रखो, ये बहुत जरूरी है। नाउ अप्लाई दिस ओमेगा इक्वेशन टू द लिंक। कौन सी लिंक में? सीई। विच लिंक? सीई। सीई को ओमेगा का इक्वेशन लगाओ, ओमेगा सीई इक्वल टू, इन दिस फॉर्म यू आर गोइंग टू राइट वी, यहां पे सिर्फ पहला लिखेंगे इसमें का, कौन है पहला? सी पॉइंट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आई। थोड़ा स्पेस रखो यहां पे, थोड़ा स्पेस रखो और जो पॉइंट है उसको लिखो। ध्यान से सुनो, ये कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो। मैंने क्या किया, ये बेसिक इक्वेशन आई हैव रिटन इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू, फॉर विच लिंक आई एम अप्लाइंग दैट ओमेगा? ओमेगा सी इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। कौन सी रेडियस? वेलोसिटी किसकी? सी का पहला पॉइंट कौन है? सी का पहला पॉइंट कौन है? लिंक सी का पहला पॉइंट कौन है? सी। तो उस वेलोसिटी में सी लिख दे, डिवाइडेड बाय आई, मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट का नाम दे दिया, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दूसरा पॉइंट कौन है? सी का दूसरा पॉइंट कौन है? ई है, डिवाइडेड बाय आई, मल्टीप्लाइड बाय। लेकिन आई कौन सा? इस आई को फिक्स लिंक के साथ जोड़ना है आपको। फिक्स लिंक कौन सी रहती है? 1। फिक्स लिंक कौन सी रहती है? 1। अभी सीई लिंक का नंबर ढूंढो, ध्यान से सुनो, ये जो स्टेप बता रहा हूं ये भूलो मत। सीई लिंक का नंबर कौन सा है? तो यहां पे 1 के साथ इसको जोड़ दो, कब तक फॉर्मूला होगा? सीई पॉइंट, ई पॉइंट मेरा कौन सी लिंक पे है? उस फिफ्थ पॉइंट 1 के साथ जोड़ दिया, I15 किया। फिर से बताओ, फिर से बताना। दिस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई एनीवेयर, एनीवेयर। ध्यान से सुनो, दिस इज बेसिक वेलोसिटी, linear velocity is equal to omega multiplied by radius. I have to write this in terms of omega. Omega equal to v divided by r. मुझे किसकी वेलोसिटी निकालनी है? E की। किसकी निकालनी है? E की। Now go to your space diagram. On which link E point is there? कौन सा लिंक पे ये पॉइंट? फिफ्थ।
उसको नाम क्या है, सीई. सो आई विल राइट दिस ओमेगा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ दैट लिंक नेम, ओमेगा सीई. ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ दैट लिंक. कौन सी का पहला पॉइंट कौन है, डिवाइडेड बाय I मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस इक्वल टू दूसरा पॉइंट डिवाइडेड बाय I मल्टीप्लाइड बाय. नाउ ये I इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो 1 के साथ सीई का लिंक नंबर ढूंढो. कौन सा है सीई का लिंक नंबर, 1 के साथ 5 जोड़ दो. 1 के साथ, सुन रहे कि नहीं. अभी चलो कैलकुलेशन को, मुझे क्या निकालना है, नहीं पहले देखो इसमें जो देंगे उसको ढूंढेंगे पहले. अभी ये इक्वेशन में यू कैन यूज एनी टू कॉम्बिनेशंस. ये दोनों को यूज करना है कैलकुलेशन को, ये दोनों को यूज करो. ये दोनों को करना है, ये दोनों को, ये दोनों को करना है, ये दोनों को. आर यू गेटिंग मी? दिस इज द इक्वेशन विच आई मेड. जस्ट गो फॉर दिस. डू आई हैव द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी? नो. वेलोसिटी ऑफ सी मुझे मालूम है, I15 मालूम है. सी तो वहां पे है, सी पॉइंट इज अवेलेबल नो. अरे है कि नहीं, 15 अवेलेबल है नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा. आगे चलते वी निकालने के लिए ये तो मालूम चाहिए, ये मालूम चाहिए, कौन सा भी एक मालूम चाहिए ना मुझे. यस और नो? तो सिंपल कौन सा जाएगा आपको बोलो. सीई लिंक नंबर कौन सी है, 5. चलो फिर से एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 5 इक्वल टू I15 डिवाइडेड बाय I12 I25. क्या मिलेगा इससे, ओमेगा 5. ओमेगा 5 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, करेक्ट है नहीं. अभी ये निकालने के लिए अगर 15 इज अवेलेबल विथ मी, वो लोकेट करना पड़ेगा. 25 अवेलेबल है, 25 वो भी नहीं है. मीन्स ये दोनों आईसीआर मुझे 15 और 25 लोकेट करने पड़ेंगे. 12 अवेलेबल है, 25 नहीं है, लोकेट करने पड़ेंगे ये दो आईसीआर. तब मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा 5 मिलेगा. जब ओमेगा 5 मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इधर रखूंगा. सुन रहे कि नहीं. इधर रखने के बाद डायरेक्टली इसके साथ ट्रीट करूंगा, क्या मिलेगा, नहीं समझा, समझे या नहीं. ये आप ये इक्वेशन किसी भी दो लिंक एक्सेप्ट स्लाइडर, किसी भी दो लिंक के बीच में लगा सकते हो. हमें 15 लोकेट करना है, चलो 15 को लोकेट करते हैं. टाइम है ना हमारे पास, नहीं है तो भी देखो 15. कनेक्ट दिस, व्हाट इज दिस, I15 no. Now this I15 as per the Kennedy's theorem will be in line with the two triangle ICRs. देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला ट्रायंगल 1 4 और 5, 1 4 और मीन्स ICR 1 4 और ICR 4 5 इनके लाइन में कौन होगा, 1 5. दूसरा ट्रायंगल 1 6 5, ICR 1 6 और ICR 5 6 इनके लाइन में कौन होगा, 1 5. तब मेरा 1 5 लोकेट होगा. चलो लोकेट करते हैं. 1 4 कहां पे, 1 4 यहां पे है. नेक्स्ट 4 5 कहां पे है, यहां पे. मीन्स ये लाइन में आते नहीं. दूसरा सेट क्या बोलता है, 1 6 और 5 6. व्हाट इज दिस, 5 6. व्हाट इज दिस, ये देखो ये लाइन पहले वाली यहां से जा रही है, यहां पे कट हो रही कि नहीं. ये 5 6 1 6 की लाइन, ये 1 4 और 4 5 की लाइन यहां पे कट हो रही है. बाय बोथ द डायरेक्शन इट इज इन वन लाइन, इट इज इन वन. ये देखो ये लाइन, ये देखो ये लाइन,
एंड दिस आईसीआर इज व्हाट, खत्म। और एक आईसीआर निकालना है हमें, कौन सा, 2 5, कनेक्ट द 2 and 5, I2 5, दो ट्रायंगल कौन से देखो, 2 3 5, 2 3 इधर 2 1 5, 2 1 डॉटेड लाइन वाला आईसीआर मिला है आपको तो भी लेना है इसको, ट्रायंगल चाहिए मुझे, कौन सी हालत में, सॉलिड लाइन करेंगे दो, नहीं तो डॉटेड करेंगे। इधर अगर हाथ पकड़ता हूं मैं 2 5 में, 2 3 और I2 5 will be in my with I2 3, इधर देखो I2 3 and I3 5, इधर का ट्रायंगल I1 2 और 1 5, नहीं समझ रहे, पीछे शांत हो गए पूरे। चलो ऊपर वाला I2 3 3 5, 2 3 किधर है, इधर है, 3 5 किधर है, यहाँ पे है, तो ये लाइन में आने वाला कहीं तो, जैसा ना दूसरा सेट 1 2 and 1 5, वेयर इज द 1 2, यहाँ पे 1 5 कहाँ पे, ये सब नो, सो 1 2 और 1 5 में मैं कनेक्शन बनाता हूं यहाँ पे नया, ये लाइन और ये लाइन कहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है, ये आंसर कौन सा होगा, हो गए मेरे कैलकुलेशन डन।